company. Another it is, we have what I said, foreign company. Yes. If the foreign domestic company income is, I said that less than 10 million, less than 10 million or 1 crore, then he has to give 30% plus educational cess. What he has to give? 30% plus. Is it clear? And if it is, I said that foreign company and it's less than 10 million, it is in a 40% plus educational cess. Cess जानते हैं ना, टैक्स ऑन टैक्स. तो ये 30% पे लगेगा और यहाँ पे एजुकेशन सेस किस पे लगेगा? 40% पे. Yes or not? Clear? So it is, I said that domestic company has this kind of, I said that taxation structure if there is a what? Corporate less than 10 million. And if it is more than 10 million, इसका मतलब ये rich के count में आ गए. And जैसे ही rich के count में आएंगे तो क्या लगेगा? Surcharge. What will be there? So there will be 30% plus surcharge plus educational cess. Yes, 30% और ये वेरी होते रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे. I said आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपको इजीली लगे कि ये सारी चीजें बड़ा आसान है. एंड 40% प्लस फॉरेन कंपनी होगी तो उसको क्या लगा दिया जाएगा? रिच के कैटेगरी में लाकर क्या करेंगे? सरचार्ज. एंड सरचार्ज कीप ऑन वेरिंग. plus educational cess. Is it clear? Understood? So which are the two things we have been able to see? Income tax, only that is a tax when you have an income is more than taxable. And as for the slab, the government every year changes. Yes or not? And then there is an, I said that corporate tax and the tax on companies. The two types of company we have, domestic company and next one is capital gains tax. Which tax I said that? Capital gains tax is means a tax on profit after selling the two things are there. It is, I said that एक तो आप दो चीजें आप सेल करते हैं. वन इट इज, आई सेड दैट प्रॉपर्टी एंड अनदर इट इज, आई सेड दैट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट. यस और नॉट? शेयर्स. यस और नॉट? एंड डिफरेंट थिंग्स. आप कितने पे सेल कर रहे हैं? I said on the property, और ये होता है आपका क्या? परचेज. ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉफिट? इट इज एन सेल रेट माइनस व्हाट? यस और नॉट?
Profit is what? Sale rate and yes. आपने किसी चीज को खरीदा, तो there are the two types of, I said that one it is, I said that long term, और यही मेंस में कुछ this year has been asked, this question has been asked this year, ध्यान रखिएगा. So I said that, और एक इनडायरेक्ट टैक्स करूंगा तो उस समय भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में भी. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, another it is, I said that short term which are we are watching, long term capital gains tax. Another we are watching, yes, tell me, short term capital gains tax. And in the long term if you are finding, इसके लिए long term जब होगा प्रॉपर्टी के केस में, if it is selling after, yes, selling after 3 years of purchase, 3 years of purchase, yes or not. यदि आप सेल 3 years of purchase के बाद कर रहे हैं, that is known as what? Yes or not. और यदि आप प्रॉपर्टी सेलिंग before 3 years, it is known as, I said that what? Yes or no. आपको ये मुझे बताइए, दोनों में से किस पे टैक्स ज्यादा लेगा गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? यस. क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो तो इसका मतलब आपने मनी बहुत दिन तक के लिए फंसाया है आपने, यस और नॉट, तो गवर्नमेंट आपसे कम टैक्स लेगी. इज इट क्लियर? तो लॉन्ग टर्म पे आपसे गवर्नमेंट क्या लेगी इन कंपेरिजन टू शॉर्ट टर्म? इनकम इज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या लेगी? और यहां पे यदि आपने खरीदा और 1 साल में ही बेच रहे हैं, यस और नॉट, तो यहां पे थोड़ा टैक्स ज्यादा होगा. इज इट क्लियर? गॉट इट? In case of securities and all, there is a long term capital gains tax, and there is which one? Short term capital gains tax. इसमें क्या होता है? more than 1 year. If we are selling after what? If we are selling after 1 year or more than 1 year, is it okay? Selling after or more than 1 year, it is known as long term capital gains tax. And if you are selling before 1 year after the purchase, yes or not, गवर्नमेंट ने इस पे मनाही कर दिया नील. After 1 year if you are selling, it is what? After 1 year if you are selling, it is what? Long term. It is, इसमें नहीं लिया गवर्नमेंट ने, और इस पे आपको सम टैक्स. यस ना. सपोज करो कि आपने 1000 रुपीज का शेयर खरीदा एंड सेलिंग एट 1200 विद इन ए ईयर आफ्टर 4 months, तो आपको कितने का गेन हुआ? 200. यस ना. 200 पे गवर्नमेंट आपसे डिफरेंट टाइप वे में आपको, ही विल टेक यू व्हाट आई सेड दैट, कुछ सेस भी लगाएगी, कुछ ये भी लगाएगी, एंड ही विल टेक टैक्स. इट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल गेन्स टैक्स. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो कैपिटल गेन टैक्स, इट इज, आई सेड दैट इट इज ऑन द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग एंड आफ्टर परचेजिंग ऑफ property and securities. Yes or not? It is after selling of property and securities, after the purchasing, means selling क्या? Securities. After a gap of a year, certain gap of a year, it is what? जब purchase किया था उससे. And there are the two types of, I said that
long term and short term. If it is after 3 years, it is known as, in case of properties and below, before 3 years, it is what? Short term. Understood it? दोनों में taxation का difference रहेगा. And thereafter, in the same way, securities, there will be long term and short term, but 1 year and less than 1 year. And less than 1 year, there is no. Sorry, more than 1 year, there is no. क्योंकि वो समय तक लगा रहा है बंदा. क्या जितने भी हमारे यहाँ इंडिया में those who are purchasing securities, क्या वो कैपिटल गेन्स टैक्स पे करते होंगे? वो बताते होंगे मैंने कैपिटल खरीदा है, मैंने वो सिक्योरिटी खरीदा है? नो. So they are not able to declare. So I said that लिखेंगे security transaction tax. Which one? Security transaction tax. Which tax I said? क्या? तो सिक्योरिटी का जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर टैक्स. तो यू नो दैट एज, लिसन मी केयरफुली, एज पर द कैपिटल गेन्स टैक्स, मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, दे आर नॉट डिक्लेयरिंग देयर कैपिटल गेन्स. They are not declaring their, as I said that as per the capital gains tax, most of the shareholder, they are not declaring their capital gains and not paying capital gains tax. Therefore, the government of India has started security transaction tax. What he has started? And security transaction tax means at each, जब भी each every securities you are purchasing or selling, at each transaction means sale and purchase of securities, at that time and minute percentage of what? Security transaction tax are taken by the government. 0.1 to 0.11%, very minute percentage they are taking, and that is not going to be creating problem to the what? Shareholder and those who are purchasing and selling. Yes or not? इसके तरीके से he has been able to cover all the, I said, that person who were not declaring their what? Capitals in the form of securities. Yes or not? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लेकर आया? एक डायरेक्ट टैक्स which is known as what? लिखेंगे. In capital gains tax, it has been found that in capital gains tax it has been found that most of the shareholders are not declaring, most of the shareholders are not declaring their capital gain or profit during sale and purchase of securities. Therefore, government has introduced security transaction tax. Therefore, government has introduced security transaction tax in which at each and every sale, in which at each and every sale and purchase, in which at each and every sale and purchase of securities,
a minute percentage of what? Minute percentage of tax have been deducted by the government which is not felt by the shareholder. Is it clear? So therefore क्या लगाया गया है स्टेल में? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या सेल पे ही लगता है या परचेज पे भी लगता है? इज इट ओके? Perquisite. And perquisite means what? Employee. एंड आपको पता हो कि एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जो बॉस होता है वो एम्प्लॉयर होता है, और जो काम करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एम्प्लॉय. अंडरस्टूड इट? यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दिया, कार ड्राइवर दिया, हाउस दिया, यस आना, और ESOP दिया, क्या दिया? It is not paid by the employer, it will be this, इससे ऊपर, इसके ऊपर टैक्स, it will be paid by whom? Yes or not? It will be paid by whom? कार, आप कार रखेंगे, कार का रोड टैक्स, कार का यदि बदलता हो, रोड टैक्स अलग होता होगा पर ईयर तो देंगे, नहीं तो नहीं. यदि कार का इंश्योरेंस करा रहे हो उस समय गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स ले लेगी. यस और नॉट? इट विल बी, ऑल द थिंग्स विल बी पेड बाय होम. ड्राइवर के इक्विवेलेंट जो मनी है उसकी इनकम जितनी हो रही है उसके रिलेटेड आपको पे करना होगा. यस और नॉट? तो इफ इट इज, आई सेड दैट, मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, स्टॉक, स्टॉक समझते हैं ना, ऑनरशिप प्लान. इसने आप, एम्प्लॉयर ने क्या किया? अपने स्टॉक में से क्या किया? सभी अपने एम्प्लॉय को क्या कर दिया? आई सेड दैट, थोड़ा सा शेयर, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑनर बन गए, यस और नॉट, इसमें से इनको बेनिफिट अब दिया जाएगा, यस और नॉट. तो इस पर भी कौन पे करेगा टैक्स? हु विल पे? एम्प्लॉय. इज इट क्लियर? सो एम्प्लॉय को इट डिपेंड्स अपॉन कि एम्प्लॉयर व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट ही इज गिविंग, यस और नॉट. We are going to see indirect tax. And the indirect tax, we can be able to say it is in an individual pocket 1 to the tax goes to the individual pocket 2, and then finally it can go in the series also, or further it can go from here to the government pocket. So it will be considered, then what I said, that indirect tax. It is clear? And if you see that indirect taxes are, shall I remove? Indirect taxes are sales tax, which I said that. Sales tax. Sales tax, if I am talking about the two types of sales tax